जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे मूड में होंगे, अच्छी एनर्जी में होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आज मैंने लाइव जल्दी शुरू कर दिया, रीजन बीइंग के हमने 2 ज़ोडिएक कवर करने हैं और उसके साथ में देयर आर गेस्ट्स जो आएंगे जिन्होंने सुशांत के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है। एंड देन देयर इज अनदर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड, तो उसके बारे में भी आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने बात करनी होगी। तो आई थॉट दैट टू कवर एवरीथिंग एल्स मुझे थोड़ा सा टाइम जो है वो प्री करना पड़ेगा इसका, सो दैट मैं फटाफट कवर करूं ज़ोडिएक्स। और उसके बाद बाय द टाइम ऑल ऑफ यू ज्वाइन, तब तक हम अगली बात पे आ जाएं जो आई थिंक दैट लॉट ऑफ यू वुड वांट टू टॉक। और मैंने वो वीडियो दोबारा से सुनी तो आई थिंक इट मेक्स सेंस टू टॉक अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद ज़ोडिएक्स फर्स्ट। सो आज वर्गो की बारी है। मैं कैमरा दूसरी तरफ घुमा रही हूँ सो दैट हम जो वर्गो और लिब्रा जो है उसकी रीडिंग कर लें आज, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं ऑन व्हाट हैपेंड। मुझे पता है कि फॉर श्योर आप लोगों ने बात करनी होगी और मुझे भी डेफिनेटली बात करनी है इस बारे में ऑन व्हाट द डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड। सो ओके, लेट मी हियर। ओके, सो पहले हम आगे और कुछ ना करके फटाफट ज़ोडिएक्स कवर कर लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं बाकी की, बिकॉज आई नो दैट आज बहुत लंबी बात होने वाली है और फिर उसके बाद शेयरिंग भी होगी, तो देयर इज अ लॉट, राइट? सो वी विल डिस्कस द डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड और क्या सुशांत ने हमें बोला था और क्या हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। वर्गो कन्या राशि, और ये आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप कन्या राशि से या वर्गो से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। तो लेट्स सी वर्गो के लिए कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना। पहला कार्ड जो है 9 ऑफ क्रिस्टल्स का कार्ड है। मेरे ख्याल से, मैं फिर भी देख लूंगी एक बार, बट मेरे ख्याल से इस डेक में क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स जो हैं इस डेक में दे आर अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर। मैं एक बार देख लेती हूँ विच इज द एलिमेंट दैट इज यूज्ड एज क्रिस्टल्स। सो दैट फेदर्स, तो मुझे पता है दैट फेदर्स एयर है। क्रिस्टल्स जो है अर्थ है, तो क्रिस्टल इज मनी एलिमेंट। बेसिकली क्रिस्टल इज पेंटिकल्स। सो क्रिस्टल इज पेंटिकल और ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो सबसे पहले तो बताता है ग्रोथ, वो बताता है बहुत समय के बाद, बहुत मेहनत के बाद फाइनली आपको ग्रोथ मिलना। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने स्पाइडर है, स्पाइडर वेब क्रिएट करते हैं और बहुत समय लगता है वेब क्रिएट करने में, लेकिन वही वेब जो है वो स्पाइडर को हेल्प करता है। I can see 9 of crystals and I can see 9 people watching. Second card जो है the Empress है. Empress is beautiful because it is beauty, abundance, it is mother, it is nurturing, it is nature, it is divine. So automatically जो एम्प्रेस कार्ड है वो बहुत अच्छी ग्रोथ, ये दोनों ही कार्ड्स अमेजिंग ग्रोथ बता रहे हैं। तो वर्गो के लिए सबसे पहली एनर्जी जो मुझे नजर आ रही है दैट इज द एनर्जी ऑफ ग्रोथ एंड लॉट ऑफ ग्रोथ। सेकंड जो यहाँ पर कार्ड है दैट इज 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स इज अ कार्ड जो बोलता है कि पे अटेंशन टू व्हाट इज राइट देयर फॉर यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत समय से कुछ चीजें आपकी जिंदगी में नहीं हुई, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में नहीं आई, जो नहीं आई उनकी वजह से यू स्टॉप्ड लुकिंग एट जो है, और वहां से आपको जो एडवांटेज मिलनी चाहिए आपका फोकस ही वहां पर नहीं है। इफ यू सी यहाँ पर 3 कप खाली पड़े हैं, शी इज फोकस्ड ऑन द खाली कप्स, और वो एक तरह से उदास है कि 3 कप खाली हैं, बट एक कप जो यहाँ पर नेचर उसको ऑफर कर रही है भरा हुआ राइट बिसाइड हर हैंड, वो उसको देख नहीं रही है। तो इट इज लाइक चेंजिंग योर एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड चेंज करना, अब जिस तरफ आप नजर घुमा रहे हो उसको चेंज करना एंड सी हाउ थिंग्स चेंज फॉर यू एंड वंडरफुली दे विल चेंज। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर दैट इज डिसीट की एनर्जी है। 25 नंबर का कार्ड है विच इज 7, और ये डिसीट का कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी एनर्जीज को एक साथ बताता है, क्योंकि मुझे ग्रोथ, चीजों का सामने आना और अबंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। उसमें डिसीट का मतलब है दैट आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपने मनी को, अपनी इमोशंस को सोच के, समझ के, संभल के शेयर करना है, बिकॉज somebody
might not be in the exact same energy as you, right? So किसी तरह का deceit या किसी तरह का धोखा जो है वो possible है, लेकिन वो धोखा मुझे literally ऐसा लग रहा है जैसे कई बार हम खुद को डिसीव कर देते हैं, और दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम सीइंग हियर। और लास्ट जो है यहाँ पर प्रिजर्वेरेंस। सो प्रिजर्वेरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बटरफ्लाई विंग्स की तरह है, और शी इज ट्राइंग टू बैलेंस हर, क्योंकि वो बटरफ्लाई विंग्स जो है बहुत आसानी से नहीं मिलते, बट योर प्रिजर्वेरेंस ऑलवेज ऑलवेज हेल्प्स यू टू गेट वेयर यू वांट टू बी। तो सबसे पहले तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपनी वाटर इनटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप कितना पानी पी रहे हो, आप क्या डाइट ले रहे हो, उसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पॉइंट इन टाइम। नवंबर के महीने में वर्गो के लिए हेल्थ में पानी का ध्यान रखना, अपनी वाटर इनटेक का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। दूसरा, हेल्थ को लेकर अपने जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसका ध्यान रखना, उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो कई बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास इशारा करती है, जहाँ पे आपको पीरियड से रिलेटेड या हार्मोन से रिलेटेड कोई इशू या कोई ट्रबल हो सकता है। सॉरी, मेरा ही हाथ लगा और कैमरा गिर गया। तो पीरियड से रिलेटेड या उससे लेकर कोई स्ट्रगल हो सकता है, तो वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ में मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा है। दीज टू थिंग्स यू नीड टू टेक केयर इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे लगता है दैट ग्रोथ या अबंडेंस या मनी जो है वो आपकी तरफ आएगा, उसमें कोई भी शक नहीं है, आपकी तरफ आएगा। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स ध्यान से करने हैं, और किस पे आप बिलीव करते हो मनी को लेकर और किस पे नहीं करते हो, ये आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे आसपास थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अगेन विद दिस डिसीट एनर्जी ऑल्सो, अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आपका फोकस सही है, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो वो चीज जो है, वो डिसीट जो है वो डेफिनेटली आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। दूसरा, हो सकता है कि पिछले किसी टाइम में किसी ने आपको डिसीव किया हो, और डिसीव करके आपके साथ कोई चीटिंग करके कोई मनी आपसे ले लिया हो, या किसी तरह का मनी का नुकसान किया हो। दैट विल कम बैक टू यू, इट इज अ रिटर्न। बट वो रिटर्न भी आपको तब मिलेगा जब आप फोकस करोगे, ध्यान दोगे कि रिटर्न आ रहा है। तो थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा ध्यान जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सही जगह पे रखें अपना। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि मदरहुड की एनर्जी है। योर रिलेशनशिप्स विल बी नर्चरिंग, आपकी रिलेशनशिप्स जो है नर्चरिंग होंगी, केयरिंग होंगी, आप दूसरों के लिए नर्चरिंग फील कर सकते हो। मदरहुड की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, बट उसके साथ में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, शायद वहां से आपको वो रिटर्न ना मिले, शायद वहां से आपको वो एनर्जी ना मिले और कहीं और से मिले। तो थोड़ा सा अपने आसपास ध्यान रखना है, कौन आपसे क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। डोंट बी लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, मतलब एक चीज का आपने जो ध्यान रखना है, डोंट बी लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छा भी करना चाहते हैं, और ऐसे भी हैं जो शायद कहीं डिसीट की एनर्जी, धोखे की एनर्जी रखते हैं। एंड इफ यू आर टू लॉस्ट इन योर वर्ल्ड, तो आप उन रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। तो डोंट बी लॉस्ट इन, टू लॉस्ट इन योर वर्ल्ड। और अगर पीछे आपकी लाइफ में ऐसा रहा है जहाँ पे रिलेशनशिप्स में धोखा मिला है या प्रॉब्लम हुई है या इस तरह की चीजें हुई हैं, तो दैट इज गोइंग टू चेंज बिग टाइम दिस मंथ। अगर करियर की बात करूं तो मुझे ग्रोथ, मनी वाइज भी, और करियर में पोजीशन वाइज भी, दोनों तरह से मुझे ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड एन अपॉर्चुनिटी माइट कम योर वे, तो आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बट आपका ध्यान है उस अपॉर्चुनिटी पे नहीं, वो बहुत मैटर करेगा। अपनी ईमेल्स, अपने मैसेजेस, अपने कम्युनिकेशंस, अपने व्हाट्सएप, जो भी आप, जहां से भी आपकी कम्युनिकेशंस आती हैं, आपने मिस नहीं करना है कुछ भी। इंश्योर दैट आप अपने मैसेजेस और ईमेल्स और उन सारी चीजों पे फोकस क्लियर रखें, सो दैट यू डोंट मिस अ कम्युनिकेशन दैट इज कमिंग योर वे, जो आपको एक मिरेकल दे सकती है। परसेवेरेंस का कार्ड जो है वो मिरेकल्स भी दिखाता है। सिर्फ द लिटिल बिट ऑफ वरी दैट आई हैव इज अराउंड दिस डिसीट एनर्जी दैट आई सी ऑन योर कार्ड्स, और मैं एक बार उसको बुक से भी देखूंगी सो दैट यू नो व्हाट इट इज अबाउट। और ये जो डिसीट है, ये कई बार हिडन टैक्टिक्स या मैनिपुलेशन भी हो सकती है, और डुप्लिसिटी भी हो सकती है। मतलब कोई किसी चीज को डुप्लीकेट चीज आपको दे, या कोई आपसे कुछ ऐसा वर्क कराए जहां जहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी हो, या किसी के साथ किसी तरह का झूठ बोलने की एनर्जी, या किसी को अच्छा फील कराने के लिए उसके साथ झूठ बोलने की एनर्जी। तो आप, जो ये एनर्जी है ना, ये जरूरी नहीं है
हो सकती है कि आप फ़ोकस ही नहीं कर थिंकिंग अबाउट नेगेटिविटी। सो ये जो एनर्जी है इसका आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बट ओवरऑल एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि जो ये कार्ड है प्रिजर्वेरेंस का, ये सक्सेस और मिरेकल्स बताता है। ये जब एक बटरफ्लाई ककून में होती है, उसका ककून टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन द प्रिजर्वेरेंस दैट शी हैज, द एबिलिटी दैट इट हैज टू बी इन दैट ककून, वो उसको वो विंग्स देती है। तो यू आर गोइंग टू गेट योर विंग्स इंटैक्ट, अगर आप उस प्रिजर्वेरेंस की एनर्जी में रहते हो और अपने आप को धोखा नहीं देते हो, और थोड़ा सा केयरफुल रहना है मनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और थोड़ा सा स्लो मूव करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक स्टेप जो है आप उसको रीवैल्यूएट करो। तो रीवैल्यूएशन ऑफ योर स्टेप्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मुझे बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है। अब अगर नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं मैं आपके लिए, तो मुझे नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए, ओके, अगर मैं ऐसे देखूँ तो मुझे 4, 5, 6, 7 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए 7 होगा। और कलर ऑफ द मंथ की अगर मैं बात करूँ तो रेड, ऑरेंज, येलो, 3 कलर्स मैं आपको बोलूँगी। और आपने कोशिश भी करनी है कि रूट चक्रा व्हिच इज़ मूलाधारा, सोलर प्लेक्स, सैक्रल चक्रा व्हिच इज़ स्वादिष्टाना, और सोलर प्लेक्सस चक्रा व्हिच इज़ मणिपुरा, ये 3 चक्रा की मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है, आपको बहुत हेल्प करेगी। बट ओवरऑल वर्गो, महीना आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, और कहीं मिरेकल्स की भी एनर्जी है अगर आप थोड़ा-सा अपना ध्यान रखो। सो दिस इज़ अबाउट वर्गो। होपफुली मैंने कुछ मिस नहीं किया है। और वर्गो के बाद अब बात करते हैं हम लिब्रा के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। सन, मून, राइजिंग, जिस तरह से भी आप लिब्रा से कनेक्ट करते हो, आप उसके लिए ये देख सकते हो। तो तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए ये महीना जो है वो कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। सो पहले 2 कार्ड्स जो लिब्रा के लिए हैं इस महीने के लिए, फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फेदर्स। ये एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, पावरफुल मैसेजेस की एनर्जी होती है, पावरफुल चेंजेस की एनर्जी होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको उसकी मतलब एक तरह से दाढ़ी दिखाई दे रही है, और वो एक्सपीरियंस है उसका, इट इज एक्सपीरियंस्ड। और उसका जो फेस है वो भी एक तरह से स्माइलिंग फेस की तरह जो है वो दिखाई देता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस की एनर्जी, एक क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए नई चीजें लेकर आ सकता है, नई नई एनर्जीज लेकर आ सकता है, नई कम्युनिकेशंस लेकर आ सकता है। दूसरा कार्ड अगर आप यहाँ पर देखें तो 6 ऑफ शेल्स की एनर्जी है। शेल्स जो हैं यहाँ पर कप्स हैं, और कप्स जो हैं वो इमोशंस की एनर्जी होती है, विच मीन 6 ऑफ कप्स। तो ये मुझे पास्ट से नॉस्टैल्जिया की एनर्जी भी लग रही है, और पास्ट से कुछ मैसेजेस का आपकी तरफ आना, या पास्ट से कुछ कम्युनिकेशंस का आपकी तरफ आना, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही एनर्जीज जो हैं ये मुझे यहाँ पर मतलब लिटरली ये दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे पास से कोई ना कोई चीज, या पास से कोई ना कोई मैसेज जो है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। और ये एनर्जी जो है वो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। और ये एनर्जी जो है ये डेफिनेटली आपको आगे लेकर जाएगी। तो मुझे यहाँ पर एक कम्युनिकेशन, और ये यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी ना नॉस्टैल्जिया की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नॉस्टैल्जिया होता है, मतलब अगर पास्ट की कोई चीज़ जो है वो रिपीट हो आपकी लाइफ में, या दोबारा से आपकी लाइफ में आए, तो वो एनर्जी जो है वो कहीं न कहीं नॉस्टैल्जिया लेकर आती है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी नॉस्टैल्जिया की एनर्जी भी लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखें लिब्रा के लिए, तो ये 2 कार्ड्स जो हैं वाओ, अगेन 6 की एनर्जी आई है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ट्रैवल की एनर्जी होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है, पर यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से आप शोर की तरफ, मतलब बहुत समय से आप डिफिकल्टी में रहे हैं, और वहां से सी शोर की तरफ आने की एनर्जी है। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पर ये जगलिंग की एनर्जी होती है, थिंग्स और सिचुएशंस दैट यू हैव बीन जगलिंग विद। तो मुझे थोड़ी सी जगलिंग, थोड़ा सा ट्रैवल, थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा पर्टिकुलरली 3-4 टाइप ऑफ एनर्जीज जो है वो मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो एनर्जीज हैं ये डेफिनेटली आपको थोड़ी सी जगलिंग तो देंगी, लेकिन हेल्प भी करेंगी। जस्ट जस्ट अ सेकंड, एंजल आपने ज्वाइन किया है बच्चा, मैं आपको बाद में ऐड करूंगी, नहीं तो स्क्रीन ना कट हो जाएगी अगर मैं अभी ऐड करूंगी। अभी हम जोडिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार ये वाला वो खत्म हो जाए सेक्शन, उसके बाद मैं आपको ऐड करूंगी।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर दैट इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है नंबर 19 वो मैच करती है आपकी एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रेस्ट और रिजुविनेशन, टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, रिलैक्सिंग योर सेल्फ, जगलिंग से थोड़ा सा अपने आप को आराम देना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। एंड देन यहाँ पर लास्ट एनर्जी जो है यहाँ पर वो मुझे ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है, विच इज वेरी वेरी क्लियर इंडिकेशन की जो रूट्स हैं, जब आपकी रूट्स जो है वो डीप होंगी, क्लियर होंगी, बैलेंस्ड होंगी, तो देयर विल बी ग्रोथ दैट विल कम योर वे। तो मुझे लिब्रा के लिए मुझे बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, वेयर देयर इज ग्रोथ कमिंग योर वे, देयर आर पॉजिटिव थिंग्स कमिंग योर वे, और देयर आर न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग योर वे। तो लिब्रा के लिए सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मुझे लगता है कि रेस्ट जो है, तुला राशि के लिए रेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अपने आप को थोड़ा आराम दें, ऑफ लेना या हॉलिडे पे जाना या थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सेशन का टाइम देना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं नजर आ रहा है, लेकिन स्पाइन हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आराम जो है वो बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। अगर मनी एनर्जी की बात करूं तो आइडियली मुझे मनी रिलेटेड कार्ड्स सिवाय टू ऑफ पेंटिकल के नहीं दिखाई दे रहा है, तो नवंबर के महीने में थोड़ा सा रिसोर्सेज को लेकर जगलिंग हो सकती है। बजटिंग जो है वो थोड़ी सी ध्यान से करनी है, बजटिंग जो है वो थोड़ी क्लियरली करनी है, बजटिंग जो है वो थोड़ी सी बैलेंस तरीके से करनी है, बहुत ज्यादा किसी चीज पे अचानक से स्पेंड नहीं कर देना है, बहुत कम किसी चीज पे स्पेंड नहीं कर देना है, तो वो जो है उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर करियर की बात करूँ तो करियर को लेकर मुझे अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि करियर में कहीं कोई ब्लॉकेज था, तो वहां पे एक तरह से अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अपने आप को आपने ग्राउंडेड रखना है, मतलब अपनी रूट्स क्रिएट करने की एनर्जी होगी। आप कुछ अगर नया करना चाहते हैं, नया बिजनेस, नया वर्क, नई जॉब, तो ये टाइम होगा जब आप अपनी रूट स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप के लिए वो बेस जो है वो क्रिएट करेंगे, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड जो है यहाँ पर मुझे एनर्जी लग रही है, अगर आपकी पुरानी जॉब है या पुराना काम है, तो भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपनी रूट क्रिएट करने के लिए, अपना काम जो है अच्छे से करने के लिए, अपने काम की, आपका काम आपके लिए बोले, उस तरह की एनर्जी। और पास से कोई अपॉर्चुनिटी जो है वापस आ सकती है, पुरानी कोई जॉब जो आपने, पुराना कोई वर्क जो छोड़कर आए हो लेकिन उसका नॉस्टैल्जिया अभी तक हो, वो ना छोड़ना चाहते हो, तो वहां से वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ वापस आ सकती है। करियर को लेकर भी मुझे कार्ड्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे जगलिंग दिखाई दे रही है, और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ब्रेक की ज़रूरत है आपको, तो वो ब्रेक आपने लेनी है, बट कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन करियर को लेकर भी आपकी तरफ आएगी, एंड जो आपका रेस्ट का टाइम है या जो आपका अपने आप के साथ कनेक्ट करने का टाइम है, वो आपको ग्रोथ लेकर आएगा। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप्स को लेकर मुझे सबसे पहले तो मुझे पास्ट की कोई रिलेशनशिप वापस आती हुई लग रही है, और आपकी रिलेशनशिप ज्यादा बेटर होती हुई लग रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दो नेवले हैं, आई थिंक ये दो, और ये एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, एक कपल की तरह है, इनके चारों तरफ शेल्स हैं, तो यहाँ मुझे रिलेशनशिप्स की एनर्जीज जो है वो बैलेंस होती हुई लग रही हैं, बेटर होती हुई लग रही हैं। और अगर कहीं कोई रिलेशनशिप में ब्रेक या इशू या प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे लगता है कमिंग बैक टू योर होम वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप को दोबारा से नर्चरिंग बनाएंगे, दोबारा से बेहतर बनाएंगे, दोबारा से कनेक्टेड बनाएंगे, और जो भी जगलिंग है, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर होंगी, और कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रांग होगी, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नई रिलेशनशिप की तरफ वेट कर रहे हैं तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है, और पुरानी रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक रही है तो उसके वापस आने की, और कहीं उसके क्लियर होने की, कहीं क्लैरिटीज आने की बात जो है वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है कार्ड्स में। लेकिन थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये कार्ड देखो तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रही है, बट देयर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू हेल्प हर टू गेट टू अ शोर। तो डेफिनेटली हेल्प या सपोर्ट अवेलेबल होगी, लेकिन कुछ चीजों को लेकर थोड़ी जगलिंग हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी मुझे आपके कार्ड्स की बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव लग रही है। देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू, नो ट्रबल। द ओनली थिंग इज थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि थोड़ी सी जगलिंग है, बट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर योर बेटरमेंट। पॉजिटिव कम्युनिकेशंस, हाँ, रेस्ट की जरूरत जो है वो डेफिनेटली रहेगी। उसके अलावा अगर आपके नंबर ऑफ द मंथ की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने में नंबर 6 दूंगी आपको फॉर श्योर, नंबर ऑफ मंथ नंबर 6। और कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो ग्रीन और ब्लू, ये दो कलर मुझे सबसे ज्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग लग रहे हैं, तो ग्रीन एंड ब्लू और कहीं न कहीं हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। ग्राउंडिंग इस महीने आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ग्राउंडिंग आपने बिल्कुल ज़रूर करनी है, क्योंकि रूट की एनर्जी है, तो ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। चाहिए, बट दैट इज ऑल फॉर लिब्रा। और आई थिंक दैट बहुत पॉजिटिव महीना है, क्योंकि मुझे ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो काफी अच्छी लग रही हैं। अभी तक जो जोडेक्स हमने कवर किए हैं उन सब के लिए, तो दिस इज अबाउट लिब्रा। और अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज के बारे में हमें बात करनी थी। और एक सेकंड में पहले कैमरा जो है उसको चेंज कर लूं। ओके, सो आज एक डेवलपमेंट जो हुई है। ओके, सो एंजल, प्रिया नहीं, हर्षिता नहीं आ रही बेटा, एंजल और बबीता आ रही हैं। और बबीता नहीं बॉब, एंजल और बॉब आ रही हैं, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करनी है आज, और कुछ चीजें वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे, तो वो शेयर करनी है आज। और उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एंजल थोड़ी देर में ऐड करती हूँ, देयर इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, और उसके बाद फिर मैं आपको ऐड कर लूंगी। और अगर बबीता आ जाएगी तो फिर आई विल ऐड हर ऑल्सो। मैं बबीता क्यों बोल रही हूँ, ओके बॉब आ जाएगी तो आई विल ऐड ऑल्सो, ऐड हर ऑल्सो। ओके, सो सबसे पहले आई थिंक दैट मुझे लगता है कि आप लोगों ने पोस्ट देख ली होगी अभी तक, बैक स्टैबिंग की, और आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मुझे वो पोस्ट भेजी है। तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज मैं यूजुअली नहीं बात करती हूँ इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन मैंने एक्चुअली 2 दिन पीछे की जो वीडियो 28th की वीडियो थी, जो मैंने जाकर दोबारा सुनी। यस 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 यस, सो मैंने जो वीडियो है 28th की, वो मैंने दोबारा से जाके सुनी। और जब मैंने वो वीडियो सुनी तो उसमें मेरे को कुछ चीजें जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट हुई, विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, विच वाज दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कोई थीफ जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अगेंस्ट स्टैंड लेगा, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। दूसरा, मैंने देखा था somebody is going to walk away from somebody, तो कोई किसी के साथ था और उससे वो अलग होने वाला है, या उससे अलग वॉक करने वाला है। तीसरी चीज मैंने उसमें नोटिस करी, वेयर ही सेड दैट somebody जिसने किसी के साथ मिलकर किसी को बैक स्टैब किया था, या किसी के साथ मिलकर किसी के साथ गलत किया था और उससे पैसे कमाए थे, that person, those two people will actually get into a fight, and one who backstabbed somebody will be backstabbed by somebody else. तो जो बेसिकली बैक स्टैबर विल बी बैकस्टैब्ड, मतलब जिसने ऑलरेडी किसी के साथ धोखा किया उसके साथ भी धोखा होगा। दैट इज द एनर्जी दैट सुशांत हैड गिवन, एंड he'd given that very very strong। मतलब तब तो हमारे माइंड में ये सब था भी नहीं, मेरे माइंड में भी कहीं दूर दूर नहीं था। आई एम श्योर वीडियो देखकर आपने भी बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ये इसके बारे में हो सकता है। बट यस, वीडियो हैड क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो। और आइडियली मुझे वो वीडियो देखकर तो बिल्कुल नहीं लगा था कि ये लिटरली ये होगा। बट जब ये हो गया तो उसमें सुशांत ने मुझे 28 को सुशांत ने जब एनर्जी दी थी, ही वाज सेइंग दैट कल ही ये होगा, कल ही होगा। एंड उसके बारे में न्यूज आई हैड सेड दैट पता नहीं वो सोशल मीडिया में आएगी या मेन मीडिया में आएगी या कैसे आएगी, लेकिन उसकी खबर भी बाहर आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि लिटरली ये कल हुआ, और आज क्योंकि परसों 28 थी, 28 को सुशांत ने मैसेज दिया, 29th को ये हुआ होगा, और 30th को ये पोस्ट आ गई। तो ये एक्चुअली लिटरली कल ही हुआ है। एंड हाउ अमेजिंग, द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज दैट सुशांत ने हमें 2 दिन पहले इसके बारे में इंडिकेशन दे दी थी, राइट? सो दैट्स वन पार्ट। अनदर पार्ट दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज दैट सुशांत के लिए हम सब फाइट कर रहे हैं, राइट? उनके जस्टिस के लिए हम सब फाइट कर रहे हैं। व्हाई इज द फाइट फॉर कैंपेन? मतलब हाईजैकिंग द कैंपेन का क्या मतलब है?
मैं लिटरली इस चीज़ को समझना चाहती हूँ। लाइक कैंपेन है, राइट? कैंपेन है, कोई भी उसके लिए करे, कोई भी जस्टिस के लिए कैंपेन करे, कोई भी जस्टिस के लिए फाइट करे, कोई भी जस्टिस के लिए आवाज़ उठाए, कोई भी लोगों को लेकर जाए, कोई भी बिना लोगों को लेकर जाए, बट everybody can have it, everybody can do it, his fans can do it, family members can do it, anybody can, anybody and everybody can do it. So what do you mean by hijacking? उस चीज की होती है जिस चीज से आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो. You can hijack a business, you can hijack a person. आप हाईजैक उस चीज की कर, हाईजैकिंग की बात ही तभी आती है जब मुझे उससे कोई बेनिफिट हो रहा है और मुझे लगता है कि कोई और इसका बेनिफिट लेने वाला है. एंड दैट इज व्हेन आई विल से दैट यू कांट हाईजैक माय वर्क, राइट? क्योंकि मेरा जो बेनिफिट है वो तुम ले रहे हो. अदरवाइज अगर मैं किसी की जस्टिस के लिए फाइट कर रही हूँ और 1000 लोग, 2000 लोग, लाख लोग और अलग-अलग जगह पे अपने कैंपेन्स चला रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, आई विल बी हैप्पी विद दैट. मुझे एक्चुअली उससे अच्छा लगेगा ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि जिस चीज़ के लिए मैं फाइट कर रही हूँ, उसके लिए और सपोर्ट सिस्टम है, और लोग फाइट कर रहे हैं. नॉट दैट एवरीबॉडी हैज़ टू बी इन सिंक विद ईच अदर, या सब लोगों को एक साथ एक चीज़ बोलनी है या एक जैसी बोलनी है, लेकिन हाईजैकिंग की एनर्जी तो आ ही नहीं सकती ना. हाईजैकिंग की एनर्जी तो सिर्फ वहां आती है जहां पे कोई बेनिफिट होता है कि मैं तुम्हें हाईजैक नहीं करने दूंगी, ये मेरा है. मेरा तुम्हारा कैसे है इसमें? मेरा तुम्हारा तो तभी हो सकता है ना जब उसमें कोई ना कोई आपका बेनिफिट जुड़ा हो, आपकी मॉनेटरी बेनिफिट जुड़ी हो, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो जुड़ी हो, तभी इट इज़ अबाउट हाईजैकिंग. अदरवाइज़ यू विल नॉट यूज़ द टर्म हाईजैकिंग. येस, यू कैन यूज़ द टर्म डिस्ट्रॉयिंग, कि आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, मैं डिस्ट्रॉय नहीं करने दूँगी, बट व्हाई हाईजैकिंग, राइट? सो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लिटरली बहुत स्ट्रांगली हिट किया, दैट व्हाई इज द वर्ड हाईजैकिंग बीइंग यूज्ड. क्योंकि हाईजैकिंग तभी होती है जब आपका कोई बेनिफिट उसमें से हो रहा हो और कोई और वो बेनिफिट जो है वो अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करे, तो दैट मीन्स दैट यू आर हाईजैकिंग दैट benefit, and I don't want you to hijack that, right? Otherwise you can destroy the moment, but you won't hijack the moment. How can you hijack? वो तो लिटरली कब्जे में लेने वाली बात तो तभी आई ना जब आप उसमें, मतलब लिटरली उसमें बेनिफिट्स. यस, यस, हाईजैकिंग इज ऑलवेज फॉर बेनिफिट्स. अगर बेनिफिट्स किसी चीज के साथ अटैच्ड है तभी वो हाईजैक हो सकता है ना. अगर बेनिफिट नहीं है तो हाईजैक कैसे हो सकता है? तो व्हाई यूज द वर्ड हाईजैकिंग, राइट? दैट इज फर्स्ट. Okay, so that is first thing that hit my head, like hijacking क्यों यूज किया है. Second, if you see तो उसमें एक और चीज लिखी है, that जो उसका नाम लिखा है, and then they've written that you are a backstabber and more. It is not only backstabber, right? It is not only backstabber. It is written you are a backstabber and more. So there is something more that has happened. मतलब सिर्फ धोखा नहीं हुआ है, धोखे के अलावा कुछ और भी है जो इस सारी कहानी में जुड़ा हुआ है, राइट? जो अभी तक बाहर नहीं आया है. और एक और चीज जो मैंने देखी, एक और चीज जो मैंने देखी वो ये थी दैट समवेयर, मतलब जिसके खिलाफ वो बात बोली है ना, हाईजैकिंग वाली, जिसके लिए बोला है दैट यू आर हाईजैकिंग द मोमेंट एंड यू आर अ बैकस्टैबर, दैट पर्सन इज ट्वीटिंग वेरी वेरी नाइसली. लाइक वो बहुत अच्छे से अभी भी कंसोल और कॉम्प्रोमाइज की भाषा बोल रही है, बिकॉज प्रॉब्ली शी नोज दैट बहुत कुछ बाहर आ सकता है इससे. तो वो उसने कुछ भी गलत नहीं बोला है. उसने जितना भी लिखा है, मुझे किसी किसी ने भेजे ट्वीट्स और मैंने पढ़े. मैं ऐसे जाके तो देखती नहीं हूँ ना. मैं उनकी एक पे तो मैं शायद, दोनों पे शायद ब्लॉक्ड हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बट मैं जाके तो नहीं देखती हूँ. बट मैंने, हाँ नहीं, ब्लॉक नहीं हूँ दोनों पे, एक पे ब्लॉक्ड हूँ शायद. पर मैंने ट्वीट्स पढ़े, और ट्वीट्स पढ़ के मुझे ऐसे लगा जैसे वो लिटरली एंगर एनर्जी में नहीं बात कर रही है, वो फ्रस्ट्रेशन एनर्जी में भी नहीं बात कर रही है. शी स्टिल ट्राइंग टू बैलेंस एंड मेक द थिंग्स पॉजिटिव, कि हम आपस में बात कर लेते हैं ना, बाहर क्यों करना है, राइट? सो दैट इज द एनर्जी. इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट कुछ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग
हो चुका है ऑलरेडी। और आई अभी तक कृष्णा मैं ये नहीं बोल सकती दैट मर्डरर तो है ही नहीं, खैर मर्डर तो हुआ ही नहीं, वो तो बच गया। बट देर इज डेफिनेटली अ फीमेल इन्वॉल्व एंड दिस पर्सन, इसका कोई ना कोई रोल तो है, इसमें कोई शक नहीं है, राइट? नहीं तो इतना सारा जो वो हो रहा है वो नहीं होता, इतना सारा जो हो रहा है ना ड्रामा, वो नहीं होता। ओके, सो अब ऐसा करते हैं दैट वी हैव अंजलि विद अस और एंजल विद अस, और मैं एंजल को ऐड कर रही हूँ स्ट्रीम में, मैं एंजल को ऐड कर रही हूँ स्ट्रीम में, सो दैट मैं आई कैन आस्क हर इफ शी वांट्स टू स्टार्ट, सो दैट वी कैन स्टार्ट। एंड देन प्रेयर टाइम में हम रुक जाएंगे, हम प्रेयर कर लेंगे और प्रेयर के बाद फिर वी कैन कंटिन्यू, ठीक है? तो एंजल, जस्ट लेट मी नो इफ यू वांट टू स्टार्ट और इफ यू वांट टू वेट फॉर बैक। Can you? Yeah, she didn't see anything वैसे तो, पर yeah, that's there. Yeah, Pooja ji, can you hear me? Yes, I can hear you, Angel. I wanted to ask, do you want to start or do you want to wait for Bab so that she can come and both of you can start together? पहले आपको नमस्कार और सारे दर्शकों को भी नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। I hope everybody is fine and well. And as far as Bubbly is concerned, मुझे नहीं पता बैब कब आएगी, but Hmm. if you want, we can go ahead and start. Sh- Sure. So let's do this. We can start, and when she comes, I will add her in, and at 7:20, around 7:20, I will probably stop you and we will take out a card for prayers and we will do the prayers and then we can continue after the prayers. Okay? Sure. All right. All right. So over to you. Okay. Yeah. So by my looking at my online ID, a lot of you might recognize me on Twitter. Uh, so I am from overseas. I won't tell you exactly where I am from, which country I'm from, just to be discreet. But हम like मैं और मेरे परिवार हम सुशांत को काफी टाइम से जानते हैं. We started watching Sushant on Jalak Dikhalaja dance show, and wow, he is just an amazing dancer. I mean, everybody knows Sushant because of his dance, and from his serial such as Pavitra Rishta, we used to watch Pavitra Rishta, and then suddenly this news came on 14th June. You know, I was at work, and at work we have a TV, where the news is always 24 hours news is going on, and this news flashed across the screen and I just couldn't believe it. My heart told me that no, this cannot be possible. So then I came looking for answers and I came to Twitter and I found my soul family. And I'm grateful, I'm thankful to Sushant and all my lovely brothers and sisters and friends that I have met on Twitter. And a group of us have come together to do some research as to what could have happened and what is the truth. We are trying to all find the truth. And Pooja ji, जैसे आपने बोला था कि हम एक family हैं, so we should not be hijacking each other on Twitter or overtaking each other or even Absolutely. fighting or arguing. We all have our difference of opinions, that's fine, but at the end of the day we are all trying to find that truth, right? And so yes, तो हमने research किया, a group of us, and we came to know that Sushant was on a mission in Bollywood. So the mission is and was to save kids. So
how we came to know this was that we were researching all the events that happened relating to 14th June, and उसमें कुछ बातें निकल आई कि relating to kids. I don't want to go into detail, but we all know that there's a lot of child trafficking, human trafficking going on in the world. And we feel that Sushant took high interest in this, and he was on a mission to save kids. Maybe there are some things that he saw while he was in the industry that struck a chord, and and then he just started his mission. So we also feel that he had come up with some dreams. Everybody knows about his 150 dreams, his dream list. Everybody has been talking about it, sharing it on Twitter, etc. And we feel when the group of people studied in depth these dreams and what they could really mean, like, are they just on the surface? For example, एक dream मैंने पकड़ा कि Sushant had mentioned that he had gone to Disney, correct? Yes. तो हम जैसे, as kids, we think Disney is such a beautiful, magical place, or you go there, you will see Mickey Mouse, you will see Donald Duck, and some big castles, and it's just like a fairyland. तो जब हमने एक research किया कि अगर Sushant was on a mission to save kids from child trafficking वगैरह, so is his dreams also connected with his mission to save kids? For example, to Disney is a place where all children and families go with their parents, etc. So what actually goes on at Disney? I mean, is there child trafficking going on there? Are dealers coming and, paying big bucks to take away children, for whatever evil purposes? Are there secret tunnels and gates there where they take away children without the parents knowing? Because there are, they have their ways of trafficking kids. So what I feel is that Sushant possibly went to Disney to check all this out. कि वगैरह ये like होता है ये चीज. So we feel that this, all his dreams and his purpose of being in Bollywood, the deeper depth of it was this only, to fight child trafficking and save the kids. So this is something to think about deeper, and I encourage, all his fans that are listening to us right now to do research and go in depth and see if this can be possible. Because everybody knows the story of 14th June, and kuch हमने इसके you can say related हमने सुना था, right? के minor वाली बात, yeah. Yeah. So I don't want to go into details, but overall, there is a group of us who do believe that his mission is much, much more deeper, and it has something relating to saving kids and fighting child trafficking. So my purpose of, and I want to thank you, Pooja ji, for allowing me to come on your platform to, discuss, so this is just an awareness, that that this could be a possibility, besides just the nepotism part,
Right. deeply connected to this whole case. So I hope Bab joins us shortly because Hmm. she will elaborate more on this. Hmm. And for now, Pooja ji, that's all I have to say. Um, but yes, I think if we all warriors come together, or we are one family, and we should not be arguing or hijacking each other on Twitter. Let's come together and try to find out the actual truth, and hopefully whatever I have brought forth on this platform, other warriors can also feel free to research and make connections, um, you know and yeah, wherever everybody is, do your part to save kids. That's it. Thank you, Angel. Thank you so, so much for coming over. And again, you don't have to thank me for, there's nothing that I'm doing. This is a platform that belongs to the whole Soul family, and anybody in the Soul family can come here and express undoubtedly. So, there is no, there's nothing that I'm doing special here. But yeah, thank you so much for bringing forth that point. And yes, Bab will come, and she will definitely, she has a lot to say. And we started before time so that there is, we can talk about everything. So what we will do is, yes, we will all think about that. And I think, yes, it is one of the points that we already have somewhere, कि child trafficking को लेकर या बच्चों को लेकर कुछ था, और वो सुशांत always he gives that energy always. So I think 2 3 दिन पहले he had given that energy, so it is definitely there. And yes, I think that we all will think further about that. And yes, about all of us being a soul family, and not hijacking each other, or not trying to cut each other, or not trying to fight with each other, I think is one of the most important things, because that's what I was talking about, that if we are fighting for the same cause, where does this belongs to me and I want to do this and you can't do this comes, that this shouldn't come, Bilkul. because as many there are, the more the merrier, basically the more people that are fighting for it, the better it is. But yes, Absolutely. we have some people like that, who are not there for a cause, they are for their personal benefits. So that's when this happens. Okay, Pooja ji. I'll just be in the background, and All when right. All right. All right. So we will take out the cards for prayer. हम prayer energy देख लेते हैं. Angel will be here in the background, और हम prayer कर लेते हैं. By the time Bab will also join, and फिर वो she can start saying what she has to, and she will share the things. So let's take out the prayer energy and prayer कर लेते हैं. अभी 7:15 के आसपास हम शुरू करेंगे, तो 35 के आसपास तक हमारी prayer हो जाएगी. So let's start doing that. एंड देन उसके बाद तब तक बैप भी ज्वाइन कर लेगी. ठीक है. सो लेट मी सी द प्रेयर एनर्जी वंस. ओ, एंजल के लिए कार्ड. यस रजनी, थैंक यू. एंजल, I forgot to take out a card for you, so let me take out a card. Wow. Angel, there is a card of Hermit for you, which is beautiful, because Hermit is like the enlightened energy, or showing the world the light that you have. So I think that that one thing that he's saying is the point that you uh, got across or put across is definitely valid, very, very valid. And also, he's giving that energy that he's like a guide around you, and you have that guiding energies, or guides, or divine energies around you to support you, to protect you, to help you. And he's around. Hermit is somewhere, his energy, he's around, so you don't have to feel confused, or because I do feel that you do see that you feel that at times confused, or heartbroken, or a little bit of anxiety, that comes sometimes to you. And he's saying that guides and angels are all around you, I am all around you, so you don't have to be worried, or you don't have to get into that energy at all. So that's the message
and let me now see the prayer energy. You want to say anything, Angel, about that? I think that was a very beautiful card that you picked up, and I definitely feel Sushant's energy around me. I know he's guiding me. I felt that for the past year deeply, and prior to that, there was that energy, that attraction that brought me to Twitter. Um, and here I am with all of you. I feel blessed, and I want to thank Sushant. I want to thank my soul family, and we are together till the end. Absolutely. Absolutely. 100%. All right. So let's see the prayer energy. Okay. ओके सो प्रेयर एनर्जी जो आज की है लिटिल फनी ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है, और टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड जो इसमें बुक में जो टू ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है वो बेसिकली वो है कि मैं कुछ सुन नहीं रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैंने जो करना है मैंने वो करना है, वो वाली एनर्जी है. बट टू ऑफ सोर्ट्स इज द कार्ड ऑल्सो जहाँ पे दिस पर्सन इज वो इलेक्ट्रिक ईल पे खड़ी है, एंड देर इज दैट इलेक्ट्रिसिटी जो उसके थ्रू भी फ्लो कर रही है, और इलेक्ट्रिक पेज पे खड़ी है, एंड देन देर इज इलेक्ट्रिसिटी जो उसके थ्रू भी फ्लो कर रही है, एंड यू कैन सी इट ऑल अराउंड हर. शी हैज टू swords इन हर हैंड्स. पीछे मून, फुल मून की एनर्जी है, और उसकी आंख पे एक तरह से पट्टी है, एंड ये जो है ना ये मुझे आंख पे पट्टी लाइक इज इन अंधेरे का कार्ड नहीं लग रहा है. दिस इज लाइक weighing the situations in the right way. बेसिकली जब आप नहीं देखते हो तो आप जो भी आपके हाथ में होता है उसको सिर्फ वे करके देख सकते हो कि क्या चीज क्या है जो आपको फील देता है, राइट? फीलिंग द सिचुएशंस, वेइंग द सिचुएशंस, वेइंग योर ओन एबिलिटीज. तो जहां पे भी मुझे मतलब जो कार्ड्स हैं, 2 है, 9 है, 9 प्लस 2 11 की एनर्जी बन जाती है, और यहाँ पर नाइट ऑफ swords है, विच इज लाइक द फास्ट एक्शन और फास्ट कम्युनिकेशन. तो जहां पे भी आई थिंक ब्लाइंड फोल्ड रहे हैं, या जहां पर भी वो एनर्जी रही है वेयर समथिंग इज अवेटेड, या कोई किसी चीज को वे करना या किसी चीज में क्लैरिटी आना जो अवेटेड है, दैट क्लैरिटी कम्स एट फुल स्पीड. सो हमने अभी प्रेयर की एनर्जी में यही एनर्जी डालनी है कि जो भी क्लैरिटी जरूरी है, जो भी क्लैरिटी का इंतजार है, जो भी लास्ट नेल इन द ग्रेव जो डालनी जरूरी है, जो लगानी जरूरी है, जहां पर भी दैट इलेक्ट शॉक हैज टू गो, जहां पर भी दैट फायर हैज टू गो, दैट हैपेंस एट द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड. ठीक है. तो आज हमने प्रेयर एनर्जी में जो नॉर्मल हम प्रेयर करते हैं वो हमने करनी है, और उसके साथ में हमने दिस इज द एडिशनल एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू पुट इन द प्रेयर एनर्जी, कि जहां पर भी जो भी लास्ट नेल इन द ग्रेव जो अवेटेड है, दैट हैपेंस इन द फुल पॉसिबल स्पीड, और जितने ज्यादा जल्दी और जितने ज्यादा स्पीड से वो करंट जो है वो दौड़ सकता है, और वो अंधेरा जो है वो वे जो है वो सही तरीके से हो सकता है, उतना ज्यादा स्पीड से हो. ठीक है. सो आर वी रेडी फॉर द प्रेयर गाइज? जस्ट कंफर्म. ओके, जस्ट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर मैसेज, और जैसे ही वी आर रेडी फॉर द प्रेयर देन वी कैन स्टार्ट द प्रेयर. Okay, chalo, let's just start then. 47. Okay, let's just start.
ब्यूटीफुल रिप्लाई आई वुड से, क्योंकि हमने 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से शुरू किया था कि वी आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और वो जो भी फाइनल नेल इन द ग्रेव है वो हो। एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी एक्चुअली में एनर्जी होती है पास्ट कमिंग बैक की, अ गिफ्ट फ्रॉम द पास्ट, अ मैसेज फ्रॉम द पास्ट, अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द पास्ट, और अ गिफ्ट कमिंग योर वे। और वो जो क्लियर एनर्जी है जहां पर, और यहाँ पे इफ यू सी मैंने सिर्फ कार्ड्स उल्टे किए हैं, और लास्ट कार्ड जो है दैट इज फुल स्पीड वाला कार्ड। सो बेसिकली सिर्फ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो रिप्लेस हो गया है विद 6 ऑफ कप्स, विच मीन्स द गिफ्ट कमिंग बैक, द पास्ट कमिंग बैक। और जो अंधेरा है, जो कंफ्यूजन है, जो अनक्लैरिटी है, जो झूठ है, उसके जाने की एनर्जी। सो यस, द आंसर इज ऑलरेडी हियर एंड द एनर्जीज आर ऑलरेडी पॉजिटिव। सो यस, ब्यूटिफुल एनर्जी। और आई थिंक हमारे पास बैब ऑल्सो हैज कम, तो लेट्स hear her out as well। और उन्होंने कुछ सुशांत के जोडियक के बारे में भी बोलना था, तो जोडियक नहीं, टैटू के बारे में भी बोलना था। तो मैंने अनम्यूट कर दिया है दोनों को। अच्छा, ओके, सो अनम्यूट, बैब यू कैन ऑल्सो अनम्यूट। एंजल, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, एंड ओवर टू बोथ ऑफ यू गाइज। ओके। Okay, Welcome, sure. Bab. We were waiting for you only. Yeah, sure, sure. Yeah. So, first of all, दी बहुत अच्छा लगा prayers में शामिल होके। एक कॉल आउट है बस, हमारी दोनों की थोड़ी हिंदी इंग्लिश सब मिक्स्ड होने वाली है, तो आई होप दैट्स फाइन। Perfect. So yeah, दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी, राइट, कि हम लोग भी सुशांत के मिशन में वर्चुअली इंक्लूड हो सके। क्योंकि मैं यूएस से ज्वाइन हुई हूँ, एनजी कनाडा में रहती है, तो वट एवर अपॉर्चुनिटी वी हैव गॉटन, सो थैंक यू फॉर दैट, वांटेड टू से दैट। सो दी, थोड़ा फॉर्मेट में बताने वाली थी, कितना टाइम है हमारे पास? Till 8:30 we have time, don't worry। एंजल ने कुछ ऑलरेडी शेयर कर भी लिया है because she came early, तो अच्छा, she shared a little bit about the child trafficking से related और उनके Disney dream से related, ओके, and ठीक है, rest is now over to you। ओके, ऑसम, या ठीक है। तो फिर मे बी माई I'll start with my journey, and then we'll talk a little bit. I have some data. I thought that थोड़ा डेटा शेयर करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, और इंडिया में कैसे उसको टैकल करने की कोशिश हो रही है, और फिर काइंड ऑफ एन अपील टू द ऑडियंस, राइट, कि कैसे हम विजिलेंट होके हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम बीइंग अ सिटीजन, टू सिटीजन। तो थोड़ा सा डेटा शेयर करना कर दूंगी, एंड देन उसके बाद टैटू, आई थिंक वैसे तो ऑलमोस्ट सब लोगों को जो भी इंक्लूडेड हैं, आपके ऑडियंस हो या फिर वॉरियर्स हो, ट्विटर पे हो या वर्ल्ड वाइड, सबको पता है, तो फिर स्टिल रीटरेट अ लिटिल बिट मोर अबाउट द टैटू। एंड देन मैंने एक पोएम लिखी थी काफी महीने पहले, तो हम लोगों ने मजाक भी किया था कि ओके, वैसे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी चंदा मामा दूर के रिलीज नहीं हो सकती, बट जादू आईडी हैं, तो उन्होंने बोला ओके हम लोग रिलीज करेंगे ट्विटर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो एक पोएम लिखी थी जो मैंने अभी ट्विटर पे शेयर भी की थी एक दो दिन पहले, तो आई कैन रिसाइट दैट पोएम ऑल्सो। And then we'll close with kind of an appeal. We have a request for people to join in on Twitter, and then one or two other things I wanted to touch upon. So if that's fine. Sure। ठीक है, ओके। सो या मेरी जर्नी, आई थिंक पवित्र रिश्ता स्टार्टेड एटलीस्ट जी पे आना 2009 में, एंड कुछ एपिसोड्स देखे, इट वाज अ वेरी होमली एक्टिंग ड्रामा, राइट। सो दैट्स हाउ इनिशियल कनेक्शन हुआ सुशांत के साथ, बट देन लाइफ हैपेंड, एंड देन 11 years. So 11 is, I know Pooja di, you always talk about numbers, right? So I was just yesterday calculating, what happened. So after 11 years, January 2020, I was traveling back from India in a flight to US. और उसमें केदारनाथ मूवी, आई डिडंट नो अबाउट दैट मूवी ऑल्सो, तो बस मुझे ऐसा अच्छा लगा कि ओके, आई नो सुशांत लाइक फ्रॉम पवित्र रिश्ता, ओके लेट मी वॉच दिस मूवी। तो वो मूवी लगाई, और इतना ब्यूटीफुल मैसेज है उस मूवी में। इनफैक्ट उनके जितने भी मूवीज हैं
सब में बहुत ही अच्छा मैसेज है. इट्स नॉट ऑल अबाउट romance or drama or all songs, right? Same is the case with his t-shirts. अगर आप ट्विटर पे जाएं या जनरली फोकस करें, राइट, दिस मैसेज इज फॉर ऑडियंस, राइट, कि हर एक टी शर्ट पे एक वेरी स्पेसिफिक उनका मैसेज था, राइट. एंड वी ऑलवेज से दैट कि उन्होंने अब ऑडियंस के लिए ऑलवेज मैसेज छोड़े हैं. इट्स अप टू अस टू decode, राइट. सो या मूवीज हों, उनके मैसेजेस हों, स्पेशली उनके ड्रीम्स. I think there are 150, but we focus usually on 50. हर एक ड्रीम इज नॉट अबाउट लाइक ओके हमें एक गोल है, एक मेरा ड्रीम है, मुझे वहां जाके घूम के आना है, राइट. इट वाज ऑलवेज देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड दैट, राइट. उनको वहां क्यों जाना था, वहां पर ऐसा क्या होता है, राइट. सो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से दोबारा उनका सब सब चीजों को अनफोल्ड करें, राइट, तो एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नए सुशांत को हम जानने की कोशिश करते हैं. तो एवरी टाइम I listen or I hear or I try to decode, it seems like, oh, I didn't know this about Sushant, right? So it's been like about 3 years, 2.5 years, but it seems like every day I'm learning more, right? So I think वो perspective रखेंगे, curious. I know there's a lot of confusion उनके केस को लेके भी, लेकिन एक वो curious perspective रख के कि हाँ, जो होगा अच्छा होगा और जल्दी होगा. एंड जो भी मैसेजेस आप देते हैं शो पे, इट इज सो पॉजिटिव. मैंने कभी लाइव नहीं अटेंड किया, बट जब भी मैं रिकॉर्डेड वर्जन देखती हूँ, मन करता है देखने का. तो ऐसा लगता है कि वी आर कनेक्टिंग विद हिम, वी आर योर रिकॉर्डिंग्स, राइट. सो या, थैंक्स फॉर डूइंग दैट फॉर ऑल ऑफ अस. या सो केदारनाथ की बात कर रहे थे, राइट. तो उसमें भी उन्होंने इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया है कि जब हम लाइक हमारा जन्म होता है, राइट, वी डोंट नो, लाइक वी हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द पास्ट, राइट. वी इन रीइंकार्नेशन में हम लोग बिलीव करते हैं, बट वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट हैव मेमोरीज, राइट. फिर उसके बाद हम एक घर में जाते हैं, वेदर इट इज अ हिंदू घर, सिख और मुस्लिम, राइट. एंड वो वैल्यूज जो हमें पेरेंट्स देते हैं, वी पिक अप दोज वैल्यूज, वी पिक अप द वैल्यूज फ्रॉम द सोसाइटल सेटअप, राइट. या हमारा एनवायरनमेंट, हम किस स्कूल में जाते हैं, किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं हमारे साथ. तो उस मूवी में वही दिया है कि लाइक लव इज ऑफ द utmost importance, राइट. इट डजंट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और जस्ट नॉट फ्रॉम लाइक रोमांटिक पीस ऑफ मैसेज, बट जस्ट जनरली उनका किसी तरह सबको दर्शन कराने लेके जाना, ये नहीं समझना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, राइट. एनीथिंग ही शेयर्ड in that movie, in Sarah's character, right, it was so beautiful, right. And then I think somehow उनका real character, right, जितना हमें जानने को मिला है, I have never met him, never talked to him, so उस कैरेक्टर से भी कुछ एक कनेक्शन होता है. तो बस वो मूवी I could not finish that in one go. इंटरप्ट हो रहा था कि एंग्शियस फीलिंग की, oh okay, if this would happen to somebody, right, how would they feel. So 3 बार उसको स्टॉप करके फिर स्टार्ट करके स्टॉप करके स्टार्ट करके फिनिश की. And so I think that there was some connection where it's like needs to know a little bit more about him. And then I think June 2020 happened, all those events, whatever it was. I believe it was a setup, we'll see. And then started to connect with Vibhor and Republic and Ishkaranji and then Forgot Films. Anyhow, it started to become a little bit complex. And so I said, let's not focus on what happened. Let's focus on what his mission was, what his dreams were, and then try to understand and see how we can pitch in. And so that's how I think Feb of 2022, this year, I actually was, I would say, guided to come there. Somehow I connected with a group in US, like how the algorithm works, and child trafficking, human trafficking, all those posts, tweets. And then I suddenly started to get connected with people who are more from India. And then एक बस हमारा एक सोल फैमिली बन गई, ग्रुप बन गया. एंड देन एम्ब्रेस जी का चैनल हो या आपसे कनेक्शन हो, वो कनेक्शंस जस्ट बनते चले गए. And we have not met any of us, right, but we are on tele, we are on WhatsApp. It just it just feels like family,
exactly like family, and hopefully we'll meet one day. But yeah, so that's the story. Last 9 months, I think were marvelous in getting to know Sushant again. And these numbers are dropping 11, 9. um, so yeah, so that's the background on how I got to know him. And then as Chhat Puja hai, so I think again related to prayers. So um, for all the audience, right? Chhati Mata protects all the children from diseases and problems. So Sushant, message for you: if you are here, energetically, physically, whichever way, uh, हम लोग सब तुम्हारे साथ हैं. And then may God give you strength to come out and tell the world the truth, and then prayers for your good health. So with that prayer, I'll share a little bit information about trafficking. So I was doing some research. I also post a lot of tweets related to that area. So 2020 ka India ka crime report, it said that 88% of victims, right, of human trafficking are actually women and children, right? So it's not men, but children and human for a reason, right? And out of that, about 47%, so like half, are actually children, right? And once that happens, most of the main three reasons where they are being used is one, prostitution, of course, which I think most of us already know, but then forced labor, right? And then domestic servitude. So the like how they are being exploited, to not being given an opportunity to एजुकेशन के लिए हो, या फिर जैसे उनका चाइल्डहुड होना चाहिए, नॉर्मल लाइफ, राइट, लाइक बेसिक नीड्स नहीं मीट कर पाते. एंड देन इंडिया, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन वैसी है, तो आई थिंक इट हैज बिकम अ सोर्स and the target and the transit point for most of the human trafficking, right? So it's been so bad. And then हम conviction rate की बात करें, I know we always look at our judicial system as not so great and not so good, but I think there are some restrictions, right? And that's where, as citizens, we can pitch in. So conviction rate के बारे में उस report में बोला गया कि it is conviction rate for any human trafficking crimes is only 10%, right? Which is very low. Very But bad. then, yeah, exactly, right? The good thing about is it also had some positive view to it, and it said that the Ministry of Home Affairs and Government of India had reached out to the states and union territories to expedite and set up the anti-human trafficking units. So they are doing a great job in whatever way possible. And as we know that कोई भी गवर्नमेंट हो, राइट, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कोएलिशन गवर्नमेंट हो, या कांग्रेस की हो, every government is going to have restrictions, right, as to what we can or Always cannot right. do due to resources. So इसीलिए मतलब आपके चैनल से लोगों को ये बताना था कि I think unless we stand up like Sushant stood up for a cause, it's very difficult for any country to make progress in any of these crimes, right? So if we can be vigilant, be aware that yes, these are the numbers, which are being shared, and then it is a big problem, and make that as a priority, and then just be aware of our surroundings. कहीं हमें ऐसा डाउट आता है, क्राइम दिखता है, please report that to child welfare or any authorities at whichever level, right? If you live in village, city, please do speak up, right? And then start to discuss. It's not a taboo topic, right? I have seen that YouTube channels pe mostly people discuss about and interconnect anything and everything with Sushant, right? Yes, if it is positive, please do so. And this, if this is the mission, right? This is the mission he is on. Then I think it's very important that we start to discuss these things in our society, right? Absolutely. When we go to religious places, please don't just talk about, uh, you know, uh,
what's happening on that day and what's happening in the family, but talk about these issues which are impacting children, women, and then in general the society, right? Office or your society meetings, right? Make that as an agenda to discuss that there. And then friends and families. I think the more confidence they will have in these missions and what Sushant stood for, then any news or speculation we hear in news via media, which may have their own agendas, I think those layers of illusion will start to go off, right? So if we can stick to the thing that yes, this is his mission, and whatever he did was for it, then anything else, all the illusions just washes off, right? And we are very Absolutely. focused on this is what he stood for, this is what he's working towards, and how can we as citizens start to contribute, right? Absolutely. So I think अपना focus वही होना चाहिए. If we are true SSRians, or we call ourselves warriors, and this is what Angie and I are trying to do, we are being on Twitter. So Absolutely. yeah, so that's a little bit about data I wanted to share to set the stage. Um, Moving on to the tattoo, I think everybody would have noted, and I think I have put it on my profile just for reference. Um, I think he said that this tattoo is a dedication to his mother, and it was his first tattoo. We don't know how many more tattoos he has on him now. We'll see, we'll figure out once he comes back. And so first tattoo had 5 elements, and he said mother and me. And so when he talks about mother and me, he doesn't talk about Shushant and Shushant's mother, right? He talks about all the children in the country and world. He talks about all the mothers, right? And his mission is to save children and then make the mothers happy, right? Um, जैसे बोलते हैं ना कि एक माँ का सारा संसार उनका बच्चा होता है, राइट? सो आई वुड से दैट फॉर सुशांत, सब माँओं को खुश रखना और सब बच्चों को सेव करना, I think that's the utmost happiness for him. So if you see in that tattoo, you would see that there is a mother and then is a child, right? And in a inverted triangle, right? And then inverted triangle, I was looking into that, what does it stand for? It stands for a woman, a mother, all about positivity, बैलेंस एंड क्रिएटिविटी. आई नो पूजा दी, आप बहुत बात करते हो कि हमें बैलेंस्ड रहना है. सुशांत इज आस्किंग अस टू बी पेशेंट and just stick with the mission and then help him, right? So it's all about power and strength, right? So हमें उनको डिमोटिवेट नहीं करना है, हमें उनको पावर देनी है, हमें उनकी स्ट्रेंथ बनना है. And then if we keep those things in mind, I think he will come victorious, and I think he has already won the war. It just we don't know what has happened in the background yet. So more to come. And then you will see that in that tattoo, so there is a child and a mother in an inverted triangle, which is again circled by the protective circle, right? So he's saying that here we need to protect the mother and the child, right, and be the power and the strength. And then you would see a cross, right? So it's again going back to what the message was in Kedarnath, right? We are all same, we are all souls connected to each other with our hearts. And so it's not about Christianity or Hinduism. He has a cross there, and then which means I think he was totally ready to even get sacrificed while executing his goal. And so it's all about hey, we need to be ready and we need to be committed with him on this mission. So he knew. I think when he tattooed, it was like it was not a thought which came to his mind, but it was like I'm engraving my goal on my body, and it'll be there until I live, right? So it's a symbolism. I think I feel so connected with all of this, what he stood for. So yeah, so that's about the tattoo. And let me see what was next. Oh yeah, next is my poem. So I'll read that in हिंदी में लिखी थी, but मैंने उसको translate भी किया है English में. So if in the end we have time, I can do that. But for now, I'll just start with Hindi.
ओके, सो मैंने इस पोएम का टाइटल दिया है अगेन, एक बच्चे की गुहार, राइट? लाइक व्हाट डज दैट चाइल्ड एक्चुअली is asking for, right? And so before I recite this poem, I once again, I know Sushant, you are here, and so I want all the audience to connect with his energy, and then as I recite this poem, envision what has gone through his mind while uh, he was having these feelings. He says he was collecting his thoughts. He was coming up with the plan as to what needs to be done, what he really went through, right? So let's all just feel it. The more we feel, the more we'll feel connected with his mission. And then all other illusions or speculations, whatever are happening around us, I think will just wash off. So let's just try to connect with his energy. Um, so Sushant, again, this one for you. एक बच्चे की गुहार, and he talks about, when I say he talks about, I'm talking on his behalf. Um, so he talks about his goal and बोलते हैं कि लक्ष्य एक ही है तुझे पाने का माँ, right? So he's talking to his mother and saying लक्ष्य एक ही है तुझे पाने का माँ, तुझे फिर से उपजाऊ बनाने का माँ, एक बीज से पौधा उगाने का माँ, प्यार और ममता से जागृति लाने का माँ, right? So he's talking to his mother and he says कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, right? I want you to be happy. And ये जो बीज है, like a thought which came to his mind, he wants it to flourish, right? He wants to execute that, to make his mom and all the mothers happy. And then how is he going to do that? He wants to bring that awareness in the society and let that seed become a plant and a tree. And he wants to do that with love and compassion. No compulsion, nothing. He wants the people to actually connect with him, be aware, and then spread the awareness, right? I think he has never forced any of his thoughts on anything, anybody. And it's just his plea, I think, for us to be aware, right? So once again, लक्ष्य एक ही है तुझे पाने का माँ, तुझे फिर से उपजाऊ बनाने का माँ, एक बीज से पौधा उगाने का माँ, प्यार और ममता से जागृति लाने का माँ. And then he moves on and says कि थॉट आया, ठीक है, गोल है, बट कब उनको ये थॉट आया, उन्होंने कैसे इन्विजन किया? So I'm again, all of these 4 paragraphs of this poem, I had connected with his dreams. So अगर आप बाद में जाके इसको एक बार फिर से सोचते हैं तो you will see that it started to connect with his dreams. He says how I came about it is एक शिखर पर चढ़ के, right? एक शिखर पर चढ़ के मौसम को निहारा मैंने. So he says कि when I was at peak of my career, right? I looked around how things were happening, how things were executed in the city, Mumbai, right? And in general. So he says, एक शिखर पर चढ़ के मौसम को निहारा मैंने, पर्वतों के घेरे में मासूम झरनों को निखारा मैंने. So now he talks about children, right? बोलते हैं कि पर्वतों के घेरे में means maybe people who are stuck, right? Kids who are stuck, moms who are stuck. पर्वतों के घेरे में पर्वतों के घेरे में मासूम झरनों को निहारा मैंने, right? So he says innocent kids, right? I looked at them as how they were treated. सब्र का बांध टूटा, right? सब्र का बांध टूटा तो एक उड़ान भरी, right? And then he looked at those situations maybe for over multiple years, and then he couldn't bear it, right? So बोलते हैं कि सब्र का बांध टूटा और एक उड़ान भरी, right? He made up his mind. And चांद पर जाने का इरादा कर, चांद पर जाने का इरादा कर एक उड़ान भरी, right? So again linking it to his dream, right? He wanted to go on moon on that expedition, but here we are talking again about awareness, about his crown chakra opening up, right? That he really
made up his mind, and that phoenix rose. And then he says, okay, एक शिखर पर चढ़ के मौसम को निहारा मैंने, पर्वतों के घेरे में मासूम झरनों को निखारा मैंने, सब्र का बांध टूटा तो एक उड़ान भरी, चांद पर जाने का इरादा कर एक उड़ान भरी, right? And then he made up his mind. Then वो बोलते हैं कि again, uh, and all this didn't happen when people say, right? I heard some videos, people asking उनको काम था या नहीं था, उनको movies मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे, right? So just wanted to reiterate that all this happened when he was at peak of his career, right? Yes. Not when he didn't have work or he didn't have right movies to work on, but at the peak, right? Then he decided it didn't matter. It didn't matter whether he finished his engineering degree. To him, he was always passionate about what he was passionate about. He didn't care whether he has to now leave his career and go talk to authorities about what is happening, right? It happened when it happened. He did what he did at the right time. So right time mattered for him. Absolutely. And then, so that's why when he was famous, I say, हसरतों की तालियों के शोर के बीच, right? When he was becoming famous, when he was getting awarded, when he was getting movies, हसरतों की तालियों के शोर के बीच, गुप्त खेल खेल कर, right? And there is a hidden meaning. I'll not say who he was or who he is. गुप्त खेल खेल कर मैं फिर लौह पुरुष बना, right? We call him Iron Man. That's one of his dreams as well. फिर लौह पुरुष का इरादा कर, right? फिर लौह पुरुष सा इरादा कर सूर्यास्त से पहले, right? So here again there is a symbolism. He's saying सूर्यास्त से पहले, like before it is too late. That's the symbol here. घरौंदों को उठा बस एक डगर चला, right? So he picked up घरौंदे, like we call it, पक्षियों के घरौंदे होते हैं ना, कि पक्षी again children, right? कि I made up my mind and now I'm on my righteous path. So again, हसरतों की तालियों के शोर के बीच गुप्त खेल खेल कर मैं फिर लौह पुरुष बना, फिर लौह पुरुष सा इरादा कर सूर्यास्त से पहले घरौंदों को उठा बस एक डगर चला. And then he says, okay, now I have a goal, I made up my mind, I know what is happening here. अब मैं आगे कैसे जाऊंगा, right? How am I going to execute my plan? तो बोलते हैं कि जंगलों को पार करता, जंगलों को पार करता नीले सागरों के बीच, जंगलों को पार करता नीले सागरों के बीच, नीले पंछियों की टोलियों में ढूंढता सिपाहियों के बीच, न था तीर कमानों का डर, न तूफानों का डर, विष का प्याला पीता यह नीलकंठ गाता चला, ये नीलकंठ गाता चला. सो बोलते हैं कि नो मैटर मुझे कितने जंगलों के बीच में से जाना पड़े, कितनी भी नीले सागरों से जाना पड़े. एंड देयर इज अ सिंबलिज्म हियर. जब वो बोलते हैं कि नीले सागर, नीला सागर, ही टॉक्स अबाउट ब्लूज, राइट? एंड ब्लूज इज बेसिकली फॉर माफिया. So he's saying no matter how many mafias I have to fight with, no matter how many problems or obstacles I have to go through, वहां पर सिंबलिज्म है जंगलों का और सागरों का, राइट? जंगलों को पार करता नीले सागरों के बीच, नीले पंछियों की टोलियों में. सो हियर आई जस्ट ट्राई टू यूज ट्विटर एज एन एग्जांपल, कि वो कनेक्टेड हैं हमसे किसी ना किसी तरह, उनको पता है, वो रीड कर रहे हैं हम क्या ट्वीट करते हैं, वो रीड कर रहे हैं कि वॉरियर्स का क्या माइंडसेट है, कितने कंफ्यूज्ड हैं, कितने क्लियर हैं, क्या नरेटिव्स फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो नीले पंछियों की टोलियों के बीच, ढूंढता सिपाहियों के बीच, राइट? सो ही इज लुकिंग फॉर पीपल हु कैन बी हिज वॉइस. And Sushant, yeah, we are here today, right? Angie and I. So hopefully it worked out. So ऐसे ही like millions of people who are connected, right? We have various channels. So he says again, जंगलों को पार करता नीले सागरों के बीच, नीले पंछियों की टोलियों में ढूंढता सिपाहियों के बीच, न था तीर कमानों का डर, न तूफानों का डर. So he talks about storms, right? Whatever has happened in the last 2.5 years, um, he's I don't think he's scared or he's worried,
to come back or anything like that. Whatever he's doing for the country, right? He sees that Absolutely. maybe there is uh, maybe there are certain things which needs to happen before he can come back, right? So yeah, na tha तीर कमानों का डर ना तूफानों का डर विष का प्याला पीता, and we call him Shiva, right? We call him, he has a energy of Yes. Kalki. We call him Ram, we call him Krishna, right? No matter which name. And I know there are people उनको बुरा भी लगता है कि he is a normal human being, हम उनको क्यों गॉड बना रहे हैं, राइट? बट अगेन इफ वी सी कि गॉड अपने दिल में बसते हैं, राइट? ही वांट्स ऑल ऑफ अस टू बी गॉड एंड गॉडेसेस who Absolutely. can form, right? Who can form our own mind, pick a cause and then work towards it, right? He wants all of us to be Absolutely. the burning man or woman. So yeah, so that's why I think we connect him with the gods, because he has some qualities or characteristics of each of those, right? जैसे कृष्णा ने सही बात और सही रास्ता दिखाया अर्जुन को, राम ने इनजस्टिस को नहीं सहा, एंड देन he dedicated his life to bring Sita home. So I think a lot of symbolism here, right? Here it could be making mothers happy, right? It could be bringing all the children back home, connecting them with their mothers, right? Then we talk about Kalki energy. I don't know much about them, but again, I think they stand for, again, fighting against injustice, right? So all of that is Absolutely. just symbolism, right? The qualities he stood for. So yeah, one more time, I just recite the whole poem. I know I had been doing a lot of commentary, but just to connect the dots, right? एक Yes, बच्चे की please. गुहार, या श्योर, एक बच्चे की गुहार, लक्ष्य एक ही है तुझे पाने का माँ, तुझे फिर से उपजाऊ बनाने का माँ, एक बीज से पौधा उगाने का माँ, प्यार और ममता से जागृति लाने का माँ, एक शिखर पर चढ़ के मौसम को निहारा मैंने, पर्वतों के घेरे में मासूम झरनों को निखारा मैंने, सब्र का बांध टूटा, सब्र का बांध टूटा तो एक उड़ान भरी, चांद पर जाने का इरादा कर एक उड़ान भरी, हसरतों की तालियों के शोर के बीच गुप्त खेल खेल कर मैं फिर लौह पुरुष बना, फिर लौह पुरुष सा इरादा कर, सूर्यास्त से पहले घरौंदों को उठा, बस एक डगर चला, जंगलों को पार करता नीले सागरों के बीच, नीले पंछियों की टोलियों में ढूंढता सिपाहियों के बीच, न था तीर कमानों का डर, न तूफानों का डर, विष का प्याला पीता एक नीलकंठ गाता चला, गाता चला. Okay, so Beautiful. I yeah, just you want to liked take it, this Pujari? opportunity, Bab. It was Sure. your poem was beautifully written, and for a person like me who cannot read Hindi, um, I want to thank you for explaining, in detail. Is very beautifully written, and thank you for sharing with everybody your beautiful poem. And yes, I also want to take this opportunity to thank all fellow warriors. Everybody has, worked really hard, trying to decode the truth in their own way. Maybe today we have put a different spin on things. Maybe people will now um, have the opportunity to think on this angle that we have raised today, even though many warriors have this thing in the back of their mind, that maybe things are related to trafficking, as एक बात निकल आई थी केस में, वो minor wali baat, but I don't want to go into details about that. But I mean, we can make correlation, right? Yeah. That he takes um, this issue very seriously, and we all should actually do our part, because children, they're वो भगवान के रूप होते हैं, and they're very precious, and these type of calamities should not occur. So wherever we are in the world, if we just do our part, as you said,
कि if we spot something, let's report it. You know, and राइट राइट। एनजी आपका थोड़ा आई थिंक ऑडियो इसमें चला गया है। या हम्म, या बट व्हाट एनजी वाज ट्राइंग टू से, एंड शी हरसेल्फ, उन्होंने खुद रिपोर्ट किए हैं ऐसे इंसिडेंट। आई थिंक वो यू नो, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, जो भी वो काम करती हैं वहां पे जब भी कुछ सस्पिशियस दिखाई देता है, यू कैन जस्ट स्पॉट। आई थिंक आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव अबाउट दिस पूजा दी, बट कई बार ऐसा होता है ना कि हम क्राइम देखते हैं, कुछ गलत हो रहा है हम देखते हैं, या तो हम बोलते हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, राइट। लेट्स से मैं ऑफिस जा रही हूँ, राइट, मुझे कुछ दिखाई दिया और मुझे टाइम पे पहुंचना है, तो हम बोलते हैं कि अरे यार, मुझे पहले मैं मेरा देखूं, राइट, मैं पहले मैं ऑफिस पहुंच जाऊं, लेट नहीं हो जाऊं, राइट। एंड बाकी चीजें तो चलती रहती हैं, या तो मेरे पास टाइम नहीं है अभी, या फिर इट डजंट कंसर्न मी, क्योंकि मेरी फैमिली सेफ है, राइट। सो आई थिंक हमें उस थॉट प्रोसेस से थोड़ा बाहर निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज वी नेवर नो कि कब किसके साथ क्या हो जाए, राइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट Sushant is all about, right? It didn't absolutely. matter to him what happens to his life. It didn't matter to him what happens to his family. It didn't matter to him when he would be able to come back, or whether he'll be able to come back, right? It doesn't matter to him. Nothing matters to him, right? तो अगर एक इंसान जो नॉर्मल इंसान है, राइट, जिसने नॉर्मल जिंदगी जी है अपनी तरह, अगर वो ऐसा सोच सकता है, तो इवन इफ वी कैन डू लाइक 5% ऑफ व्हाट ही डिड, राइट, या घर नहीं छोड़ना, जो कर रहे हैं वो नहीं छोड़ना, बट एटलीस्ट जो हमें आसपास दिखाई देता है उसको प्लीज इग्नोर ना करें, राइट। अगर आपको पता नहीं कि कहाँ रिपोर्ट करना है, प्लीज फाइंड इट आउट, राइट। maybe go to a nearest police station if we are seeing something getting repeated. आप अगर पूजा दीदी से आप कनेक्ट करें, and then she can connect anybody who's interested, you know, all of you to us. And जितने भी मैंने ट्वीट किए हैं, it is all research based as to how things happen in particular households, how things happens in corporates, how things happen behind the scene politically, right? So Yes. हर जगह we can make a difference, not just about child trafficking, human trafficking, any cause you are connected to, please stand up, and then be part of the solution. Let's not rely on government. He did not rely, I mean, he must have, but not when this thought came to his mind, right? He figured his way out as to उनको किसका support लेके ये सब execute करना है, but जब थॉट आया होगा तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि हाँ, अभी मुझे ये करना है, अब मैं किसके पास जाऊं, राइट, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, राइट। एंड सो आई थिंक वैसा अगर हम माइंडसेट रखेंगे, तो इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि our country will be, I mean, it's already progressing, right? We call ourselves a developing country है, but I don't think so. I think we have developed enough. It just अपनी awareness को थोड़ा और broaden करना है. Yeah, so that's about it. And one tweet I read, Pujadi, just coming before uh, to this session, and I think it's again Sushant wanting me to talk about that. As you say, right? He talks. He really talks, and I can share one of my experience which happened in office also. So just wanted to read this tweet, and it's all about energy, frequency, and vibration, right? Why are we together? Why are we here? Either on Twitter or on this channel, it's all energetically. We are all at the same Same frequency. We have the vibration. similar thoughts. Yeah. So this, I'll just say that in English. This thought, right? It says we are living in a holographic matrix, right? We talk about matrix, like हमारी जैसी प्रोग्रामिंग हुई है बचपन से, हमें जो सिखाया गया है, हमें बोला गया है कि अरे तुम तुम्हारे ऊपर ध्यान दो, तुम्हारी फैमिली पे ध्यान दो, बाकी सब हो जाएगा, या गवर्नमेंट कर लेगी, या देयर आर अथॉरिटीज, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मैट्रिक्स, लाइक हाउ टू कम आउट ऑफ दैट.
they say that we are living in a holographic matrix, right? Thought materializes reality on this planet as vibrating light that is brought in through a magnetic electromagnetic frequency, right? So it's the thoughts which we feed to ourselves which makes it our reality, right? So when we talk about मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें बताया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता, right? So we Absolutely. need to start to think about how we change our vibration, how do we vibrate at a different frequency, and especially because we are all connected with Sushant, right? So Absolutely. again, we are living in a holographic matrix. Thought materializes reality on this planet as vibrating light that is brought in through a electromagnetic frequency, right? And then thus that we see or think of as a solid reality is a hologram created through thought, light, and sound, right? We are Absolutely. nothing but uh, people or souls living in a matrix. How the ideas are fed to us, that's what we execute. So it's up to us to change our thoughts, Absolutely. vibrate at a higher frequency, connect with the right souls who had or who have a goal, which is for humanity. And then we will see that our thoughts will also start to change, and we will be part of a society and be part of a solution than somebody who's just raises a problem and then thinks that it will be solved by somebody else. Absolutely. Yeah. Absolutely. So, yeah, I think this is what I had, Pujadi. And one appeal, we were also thinking कि हम और क्या कर सकते हैं. तो हम लोग ये सोच रहे थे कि ऑडियंस में अगर कोई आईटी में है या फिर जिसके पास थोड़ा टाइम है, जो हमारे लिए मे बी फेसबुक पेज सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर हम लोग अपने थॉट्स और थिंग्स लाइक एनीथिंग व्हिच वी रीड decode अबाउट ड्रीम्स एंड स्टफ लाइक दैट हम लोग वहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं. तो अगर कोई ऑडियंस में है, प्लीज रीच आउट टू पूजा दी and then we can connect and see how we can be part of the solution, and how can we help Sushant taking his goal further. So yeah, with that, that's about it. I think again, from NG's and my behalf, we really, really want to thank you for this opportunity. I know it's very difficult to set up a channel and then bring people along. So आपके जैसे लोग जो सुशांत के लिए रोज प्रेयर करते हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे बैलेंस में रहना है. एंड आई हैव यूज्ड दोज मैसेजेस फॉर माई सेल्फ व्हेन आई फील सो डिमोटिवेटेड कि क्या हो रहा है सुशांत, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, केस क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, इतने सारे नरेटिव्स हैं. कभी कभी मन करता है कि बस ट्विटर से भी ऑफलाइन हो जाओ, जब आएंगे सुशांत तब आएंगे, राइट, कनेक्ट कर लेंगे, सो या आई थिंक being in that balance energy is very, very important. And being on that righteous path, selecting a cause and then connecting with that and doing, making a difference at our own level is very important. Please do spread um, true information about Sushant and his mission with friends and family in your society, at religious places when you go. Please spread the information. Being the country we are, there are about, I think data shows that 800 million users हैं जो online होते हैं. Most of them are youngsters and children. उनको शायद ये बात आज समझ नहीं आए, राइट, कि क्या होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एंड ऑल दैट. बट पेरेंट्स जो ट्विटर पे नहीं हैं, जो आपका चैनल देख रहे हैं, they can make a big difference. They can go talk, go to schools and get some slot and talk about these things, right? It's not a taboo topic at all. And then teach the children right values. Be safe while playing games online. Be safe by connecting to right people on social media. It's growing fast, TikTok and Insta. So please keep a watch on your kids. उनको भी सिखाएं, उनको भी बताएं ताकि ये ट्रूथ भी
spread ho sake. So yeah, with that message again, Pooja Di, and thank you from NG and my side and Sushant's side. Um, Sushant, we are there with you. We are your power and strength. So yeah, thank you, Pooja Di. Thank you, Vijay. Thank you for coming, and thank you, Angel. Thank you to both of you. And yes, आपने एक अलग perspective दिया है. Rather, it has been part of it, सुशांत के mission का. But the way you elaborated it, I think बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये करना, और हम सब के लिए जरूरी है एक जनरल अवेयरनेस. एंड यू आर राइट कि हम देखते हैं किसी के साथ कुछ हो रहा है और फिर हम अपने पे फोकस, वो विभोर बोलता है ना, सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए. तो आई थिंक एक मिशन पे रहना कि हम देश के लिए, हम अपने, और दिस इज नॉट इवन फॉर समबडी एल्स, सुशांत के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है, अपने ही बच्चों के लिए है, अपनी ही फ्यूचर जनरेशन के लिए है. तो यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ ओनली. सो वो थोड़ी मेरा घर, सिर्फ मैं, मेरा घर वाली मेंटालिटी जो है ना, उसको छोड़ने का टाइम आ गया है. एंड इट इज टाइम टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस, क्योंकि आज किसी और का बच्चा किडनैप हो रहा है तो कल को वो हमारा भी हो सकता है, कल को वो किसी का भी हो सकता है. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to spread that awareness and also to take the right steps. So yes, thank you so much for bringing that forth. And the poem is beautiful, and the way you explained it made it even more beautiful. So that explanation makes it even more beautiful than जब आप poem पढ़ते हो और जब आप उसके depth समझते हो, तो it is very very beautiful. And yes, Sushant is, I am sure, right here, और बहुत जल्दी he will be out here, and we are all his warriors, and we'll do everything that we can do. And I think we've made a collage जिसमें there are more than 50 people. उन्होंने पूरी commitment करके, that even if their children or their family or they are at stake, और या उनको अपनी life भी stake पे रखनी पड़े, they are all ready to sacrifice everything. That's the commitment, I think, that we that he's looking for, that we need, and we are already one step into it. So yes, I think we'll do it all. And We love you, Sushant, and we thank all the light workers, all the true warriors who are working towards justice and righteousness in this world. Thank you to all of you, um, all of you workers, all of you true warriors. Thank you so much from the bottom of our heart. Yeah. thank you, thank you, Angel. Thank you, Thank you, Sushant. Angel. We love you, Sushant. Love you, Didi. And Love and you. then Angel, we'll come back with some more information, and then we'll Got be one card connected for with you. the. Yeah, thank you. A message from Sushant. Okay, there are more than one. Okay, so wow. Okay, so I have a lot of cards for you. First is Queen of Pentacle. It is a energy of being grounded, or kind of seeing the beauty in everything. Second energy, standing firm on your ground and for the right things, so raising your voice. Third is taking the leap of faith, looking at the light always. And the heartbreak that you feel at times, or the emotional setback that you feel at times, come out of that, and lot of things that are in you, that are around you, and rest. Follow your intuition. I think this is one thing that he's saying, that stand firm your ground, keep yourself grounded, don't let emotions rule you, follow your intuition. And he is there like a guide around you. And Hermit card came from NG also, so he's definitely around both of you. That energy is there. Just the only thing is that, yes, balance your emotions. Don't focus on emotions more, and focus on the right targets more. And listen to your intuition. Very important, very important. So Thank you, thank you Pooja so much. Di. Thank you, Pooja. Thank you, Thank you, Pooja Di. everybody who joined the session also and gave us the opportunity to hear us out. Thank you. Thank you, Yeah, bye bye. bye. Okay, Bye. bye. Bye Bye. bye. Bye.
ओके गाइस, सो अब हम कल मिलते हैं, कल करेंगे। एंड आई रिमेम्बर आरजे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। शी टोल्ड मी सच अ लॉन्ग टाइम अगो, और फिर पहले स्ट्रीम यार्ड का हो गया, फिर कुछ कुछ होता रहा। तो आरजे वी विल टेक दैट अप। अगर मैं कल एक्सटेंड कर पाई थोड़ा सा, तो वी विल डू इट कल जोडिक्स के बाद। इफ अगर कल नहीं कर पाई, तो एज सुन एज वी आर डन विद द जोडिक्स, आई विल गेट यू ऑन, and we will definitely listen to your experience again. और ओके प्रेशियस, मैं एक लास्ट कार्ड निकाल देती हूँ, एंड देन मेरा किचन जो है वो बहुत जोर जोर से पुकार रहा है अब। इट इज 8:22, सो मैं एक एंजल कार्ड निकाल देती हूँ, एंड आई विल ट्राई कि मैं ये जो, क्योंकि लाइव बहुत लंबा हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और जो एक्सपीरियंस शेयरिंग का पार्ट है, और जो मतलब जो जोडिक का पार्ट है, प्रेडिक्शन का, आई विल पुट ऑल ऑफ इट इन सेपरेट वीडियोस सो दैट यू गाइस कैन सी इट। ठीक है, सो मैं एक लास्ट कार्ड निकाल देती हूँ। ओके, सो वी हैव अ योगिनी। तिरमवा पदा 56 नंबर का कार्ड है। 5611 भी बनता है, एंड शी इज एक्चुअली किलिंग अ डीमन, इफ आई एम राइट। मैं एक बार इसको देख लेती हूँ बुक से, बट इट इज लुकिंग लाइक शी इज किलिंग अ डीमन। और 56 द तिरामा, द पावर ऑफ एक्शन, दिस कार्ड इज ऑल पावर ऑफ एक्शन। और ये योगिनी जो है, इट इज ओके, इट इज बॉर्न आउट ऑफ सेक्रेट मंत्रास, एंड इसीलिए वो बहुत, उनका बिल्कुल क्लियर और अनपॉल्यूटेड माइंड है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, और वो किसी भी डाउट और रिग्रेट से फ्री हैं। उनकी डिवाइन एनर्जी जो है वो हार्मनी में फ्लो करती है, और वो स्ट्रेंथ देती है हर एक राइट एनर्जी वाले इंसान को टू स्ले द डीमन दैट रिसाइड इन अस। तो फियर को दूर करती हैं, डर को दूर करती हैं, और लिटरली डीमंस को मारती हैं, और उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज नो regret, there is no negative feeling, there is no doubt. I am very clear कि कौन से demons slay करने हैं, and I am all set to slay them all. So yes, so beautiful energy, and with that I will leave for now. और मैं एक दो दिन, आज का दिन, कल का दिन शायद मुझे लगे, but I will break the video into different parts, and I will do it. Okay, so all right, so yes, there is lot of magic in in today's video, in today's sharing, and we will have more magic coming our way for sure. Thank you so much guys, take care, bye bye, love you all.